Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, dear children. Today I will explain you lesson number 5, Taj under Sage. So, my dear children, in this lesson you will come to know how the Mumbai's Taj Hotel was under siege during 26 November 2008 and how the hotel's employees saved the life of guests which were living in the hotel at that time. So, let's start reading and explanation. On 26 November 2008, terrorists simultaneously attacked about a dozen locations in Mumbai, including one of the most iconic building in the city, the Taj Mahal Palace Hotel. 26 नवंबर 2008 में कुछ आतंकवादियों ने मुंबई के करीब 1 डजन स्थानों पर हमला किया, जिसमें एक जानी मानी बिल्डिंग ताज महल पैलेस होटल भी थी. For 2 nights and 3 days, the Taj was under siege, held by men with automatic weapons. They took some people hostage, killed others, and set fire to the famous dome of the hotel. वे करीब 2 रातें और 3 दिन तक आतंकवादियों से घेरे हुए थे, जिनमें कुछ पुरुषों के पास हथियार भी थे. कुछ लोगों को बचाया गया, कुछ को मारा गया और कहीं पर आग लगा दी. So, on 26 November 2008, some terrorists attacked on the Taj Hotel Palace, on Taj Mahal Palace Hotel, and for 2 nights and 3 days it was under siege terrorists. The siege of the Taj quickly became an international story. Lots of people covered it, including CNN's Fareed Zakaria, who grew up in Mumbai. In a report that aired the day after the attack, Zakaria spoke about the horror of what had happened in Mumbai and then pointed to a silver lining: the behavior of the employees at the Taj. यह ताजमहल पैलेस की एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय कहानी बन गई. कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा. इनमें से एक CNN's फरीद जाकरिया, जो कि मुंबई में ही बड़े हुए थे, अपनी एक रिपोर्ट में इस घटना के बारे में बताया कि कैसे होटल के एम्प्लॉयज़ ने होटल में रहने वाले मेहमानों को बचाया. It became an international story, and a person named CNN Fareed Zakaria mentioned how the employees patiently handled this dangerous condition and pointed to a silver lining: the behavior of the employees at the Taj. Apparently, something extraordinary had happened during the siege.
According to hotel manager, none of the Taj employees had fled the scene to protect themselves during the attack. They all stayed at the hotel to help the guests. इसके अलावा फरीद जाकरिया ने एक विचित्र बात बताई कि कैसे होटल के मैनेजर्स और ताज एम्प्लॉयज़ ने सबकी जानें बचाई, जबकि उनको पता था कि वह किसी दूसरे दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना फ़र्ज ईमानदारी से निभाया और वह सब वहाँ तब तक रहे जब तक सारे गेस्ट को सुरक्षा बाहर नहीं निकाला गया. I was told many stories of Taj Hotel employees who made sure that every guest they could find was safely taken out of the hotel at grave risk to their own lives. Jakaria said on his program. उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में यह भी बताया कि होटल के एम्प्लॉयज़ ने बिना किसी झिझक के सबकी जानें बचाने में बहुत योगदान दिया. There was the story of the kitchen employees who formed a human shield to help the guests who were evacuating and lost their life as a result, of the telephone operator who, after being evacuated, chose to return the hotel so they could call guests and tell them what to do. They stayed at their post, alerting guests to lock doors and not to step out. उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त ताज होटल के किचन कर्मचारियों ने भी मेहमानों को बचाने में बहुत सहायता की और कुछ टेलीफोन ऑपरेटर्स ने भी लोगों को इन्फॉर्म किया कि दरवाजे बंद रखें और बाहर ना निकलें. हर जानकारी वह टाइम टू टाइम देते रहे. He told many things regarding this incident, how kitchen employees and telephone operators were helping guests to save their life. When Karambir Singh Kang, the Taj Mumbai's general manager, heard about the attack, he immediately left the conference he was attending at another Taj hotel. He took charge at the Taj Mumbai the moment he arrived, supervising the evacuation of guests and coordinating the effort of firefighters amid the chaos. जब करम सिंह कैंग जो ताजमहल के मैनेजर थे और जब उनको पता चला इस दुर्घटना के बारे में, तब वह भी अपना एक कॉन्फ्रेंस जो दूसरी ताज होटल में चल रहा था उसे छोड़कर उसी वक्त वहां पहुंचे. वहां जाकर उन्होंने सारा दृश्य देखा कि कैसे सारे होटल के एम्प्लॉयज़, फायर फाइटर्स सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं. So when Karambir Singh heard the Taj Mumbai's hotel's incident, he immediately reached there and observed all the things, how all employees were trying to secure the life of the guest. His wife and 2 young children were in a 6th floor suite where the general manager traditionally lives. Kang thought they would be safe, but when he realized that the terrorists were on the upper floor, he tried to get his family. It was impossible. By midnight, the 6th floor was in flame and there was no hope of anyone surviving. Kang led the rescue efforts until the noon next day.
उस होटल में उसकी वाइफ और उसके 2 जवान बच्चे भी 6th फ्लोर पर रहते थे, जहां अक्सर जनरल मैनेजर जाकर रहते थे। कैंग ने सोचा कि उसकी फैमिली वहां सेफ होगी, पर जब उन्हें लगा कि आतंकवादी ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, तब उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नामुमकिन रही क्योंकि आधी रात को ही 6th फ्लोर पर आग लग गई और किसी को बचाने की उम्मीद नहीं रही। उन्होंने अगले दिन दोपहर तक कोशिश की, पर किसी को बचा नहीं सके। In that hotel, his wife and 2 young children were also living, but due to fire flame, he could not save his family. Only then he called his parents to tell them that the terrorist had killed his wife and children. His father, a retired Indian Army general, told him, "Son, do your duty. Do not desert your post." Kang replied, "If the hotel goes down, I will be the last man out." जब वे अपनी फैमिली को नहीं बचा सके, तब ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बताया कि आतंकवादियों ने उनकी वाइफ और उनके बच्चों को मार डाला। तब उनके पिताजी, जो इंडियन आर्मी जनरल में थे, उन्होंने कहा कि बेटा, आप अपनी ड्यूटी करो। तब कैंग ने रिप्लाई किया कि हाँ, मैं अपना पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगा और सबको बचाने की कोशिश करूंगा। सबको बचाने के बाद ही आखिरी में मैं होटल से बाहर निकलूंगा। Often during a crisis, a single hero or small group of heroes who take action and risk their lives will emerge. But what happened at the Taj was much broader. During the crisis, dozens of workers, waiters, and bus boys and room cleaners who knew back exits and paths through the hotel chose to stay in the building under attack until their customers were safe. As many as Taj Mumbai employees, a third hotel's casualties, laid down their lives while helping between 1,200 and 1,500 guests escape. They were the very model of the ethical, selfless behavior. अक्सर लोग हमेशा किसी दुर्घटना से खुद को बचाने के लिए बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब ताज पैलेस होटल की कुछ बात ही निराली थी। कई वर्कर्स, वेटर्स, बस बॉयज़, रूम क्लीनर्स, जिनको बैक एग्ज़िट पता था होटल का, लेकिन फिर भी वे लोग होटल के अंदर ही रहे जब तक सारे मेहमानों को सुरक्षित न किया गया। करीब 11 मुंबई एम्प्लॉइज़ अपनी जानें गंवाकर 1200 से 1500 मेहमानों की जानें बचाई। सचमुच उन लोगों ने निस्वार्थ सेवा की और अपना फ़र्ज़ अदा